distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I have the honor to welcome you all to the state ceremony for conferring Bangladesh Liberation War Honor on His Excellency Shri Atal Bihari Vajpayee, the former Prime Minister of the Republic of India, for his outstanding contribution to our liberation war in 1971. His Excellency Shri Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of India, has graciously agreed to accept the honor on behalf of Shri Atal Bihari Vajpayee. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, may I now request Her Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, to deliver her speech. Ladies and gentlemen, Her Excellency the Prime Minister of Bangladesh. মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, ভেরি গুড আফটারনুন টু ইউ অল। বাংলাদেশের অগ্রণী বন্ধু ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারতরত্ন পদ্মবী ভূষণকে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। শ্রী বাজপেয়ীর যোগ্য উত্তরসূরি এবং বাংলাদেশের আরেক বন্ধু শ্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে সম্মাননা স্মারকটি হস্তান্তর করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে 1971 সালে সমগ্র বাঙালি জাতি যখন পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, সে সময় ভারতকে আমরা আমাদের পাশে পেয়েছিলাম। ভারতবাসী বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। রাজনীতিবিদ হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে শ্রী বাজপেয়ীর অপূর্ব সমর্থন ভারতীয় রাজনৈতিক মহলকে আমাদের স্বাধীনতার সপক্ষে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সে সময় তিনি যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন সেগুলো আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে বিশেষ অবদান রেখেছিল। বাংলাদেশের প্রতি তার সহযোগিতা আমরা সবসময় পেয়েছি। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তার প্রমাণও মিলেছে। সম্মানিত সুধী, আমরা খুবই খুশি হতাম যদি শ্রী বাজপেয়ী আমাদের মাঝে উপস্থিত থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তার শারীরিক অবস্থার জন্য তিনি এখানে আসতে পারেননি। একজন সুকবি হিসেবে শ্রী বাজপেয়ী একবার বলেছিলেন, আমি কোট করছি, আমি জয় পরাজয় ভীত নই, আমার কর্তব্য পালনের পথে যাই আসুক না কেন আমি তা গ্রহণ করব, কারণ এটা যেমন সত্য ওটাও তেমনই সত্য, আনকোট। এ ধরনের একজন মহৎ ব্যক্তি এবং বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধুকে সম্মানিত করার মাধ্যমে আমরা নিজেদের সম্মানিত করছি। আমরা তার সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক, বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক। Thank you, Your Excellency. Ladies and gentlemen, I would now request Mr. Mohammad Musharraf Hossain Bhuiya, Cabinet Secretary of the Government of the People's Republic of Bangladesh, to please read out the citation of conferring Bangladesh Liberation War Honor on His Excellency Shri Atal Bihari Vajpayee, the former Prime Minister of India. Excellencies, ladies and gentlemen, it's my privilege and honor to read out the citation conferring the Bangladesh Liberation War honor on His Excellency Shri Atal Bihari Vajpayee. Citation starts. A highly respected political leader and a former Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee played an active role in support of the Liberation War of Bangladesh. As President of the Bharatiya Janasangh,
and a member of the Lok Sabha, he took various steps towards that end. In an editorial column for the organizer, Sri Vajpayee welcomed Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's historic declaration of Bangladesh's independence and called upon the government of India to recognize the government of Bangladesh and provide necessary assistance to the freedom fighters. To press the demand for Indian government's expedited support to Bangladesh's liberation war, Jana Sangh held a Gana Satyagraha during 1 to 11 August, and their volunteers organized a huge rally in front of the Indian Parliament House on 12 August 1971. Sri Vajpayee took a firm stand at national and international levels for the cause of Bangladesh and its striving people. Born on 25 December 1924 in Gwalior of Madhya Pradesh, Sri Atal Bihari Vajpayee entered politics during the pre-independence era. He took part in the Quit India movement, which led to his arrest and imprisonment. Sri Vajpayee joined Bharatiya Jana Sangh and took over as its national president in 1968. He played a pivotal role in forming the Bharatiya Janata Party (BJP) in 1980 and became its first president. He has been an active member of the Indian Parliament for about 5 decades and was elected from 4 different states at different times. Sri Vajpayee served as the Prime Minister of India for 3 terms. A versatile personality, Sri Atal Bihari Vajpayee is a gifted poet and an orator par excellence. He was awarded with Padma Vibhushan in 1992 and Bharat Ratna in 2014. He was also honored with Best Parliamentary Award in 1994. He retired from politics in December 2005. The people of Bangladesh would always remember the significant contributions made by Sri Atal Bihari Vajpayee towards supporting the cause of Bangladesh's liberation war and consolidating friendship between Bangladesh and India. As a mark of deep respect and profound gratitude, the government and the people of Bangladesh, Sri Atal Bihari Vajpayee is being awarded in Dhaka today, 24 Joishta 1422 Bangladesh, 7 June 2015 AD, with the Bangladesh Liberation War honor. Citation ends. Now I humbly request His Excellency Sri Narendra Modi, Prime Minister of the Government of the Republic of India, to kindly receive the award on behalf of His Excellency Sri Atal Bihari Vajpayee from His Excellency Mr. Muhammad Abdul Hamid, President of the People's Republic of Bangladesh. I thank you, Excellencies. Thank you, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank you, sir. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, may I now request His Excellency Sri Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India, to deliver his acceptance speech. Ladies and gentlemen, His Excellency Sri Narendra Modi. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और उपस्थित सभी गणमान्य भारत के और बांग्लादेश के अग्रणी महानुभाव,
मेरे लिए आज ये सौभाग्य की पल है, भारतवासियों के लिए गौरव का पल है, जिस महापुरुष ने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा में खपा दिया। सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव आए, उसके लिए जो जीवन भर जूझते रहे और राजनीतिक दृष्टि से मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के लिए वे प्रेरणा मूर्ति रहे। ऐसे मां भारती के सपूत भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज बांग्लादेश सम्मानित कर रहा है और बांग्लादेश के जंग के समय मुक्ति योद्धाओं के साथ भारत के सैन्य ने जो अपना रक्त बहाया था और हर भारतीय नागरिक इस समय एक प्रकार से बांग्लादेश के सपनों को साकार करने के लिए जूझता था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो नेतृत्व मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, विपक्ष में रहते हुए देश की राजनीति को दिशा देने का जो उन्होंने निरंतर प्रयास किया, उसका आज गौरवपूर्ण स्मरण हो रहा है। इसके लिए मैं बांग्लादेश का बहुत बहुत आभारी हूं। Honorable President, Honorable Prime Minister, all the senior dignitaries present on the dais, all the present distinguished guests from India and Bangladesh. For me today, it is a matter of great fortune and a matter of great pride for all Indians that a great leader like Atal Bihari Vajpayee is being honored. He dedicated his entire life to the service of the country and he fought for the rights of the common man. And from a political point of view, he was our inspiration for political workers like myself. For this great leader who was conferred the Bharat Ratna, today Bangladesh is honoring him with the Liberation War honor. At a time during the Liberation War, when the Mukti Jodhas of Bangladesh were shedding blood, Indian citizens too were fighting side by side with them, and in a way helped realize the dream of Bangladesh. And it was under his leadership, even though he was in the opposition, he was able to give direction for this in our country. And this is being remembered today here in Bangladesh. For this, I express my gratitude to Bangladesh. वाजपेयी जी का अगर स्वास्थ्य ठीक होता और आज स्वयं यहाँ मौजूद होते तो इस अवसर को 4 चांद लग जाते। और आप सबने प्रार्थना की है अटल जी के स्वास्थ्य के लिए। मुझे विश्वास है कि आपकी प्रार्थना फलेगी और अटल जी स्वस्थ होकर के फिर से हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे। If Vajpayee ji was well enough, if his health was in a good condition, and if he himself was present today to receive this honor, then really this occasion would have been very glamorous. And with all of you who have prayed and conveyed your prayers, I am sure this will bear fruit, and Vajpayee ji once again will resume good health and again give direction to us. आज के इस अवसर पर ये सबसे बड़े आनंद का विषय है कि उस युद्ध की स्मृति में अवार्ड दिया जा रहा है और महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों दिया जा रहा है, जो स्वयं एक गौरवशाली मुक्ति योद्धा रहे हैं और उनके हाथों से सम्मान हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़े गौरव की बात है। और दूसरी बात, बंगबंधु
जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में बांग्लादेश से लड़ाई लड़ा और जीता, उनकी बेटी की उपस्थिति में ये सम्मान प्राप्त हुआ। And this occasion is also a matter of great happiness for us, that in the memory of the Liberation War, this honor is being conferred, and this is in the presence of an illustrious Mukti Yodha like the President himself. It is a matter of great pride for us. And secondly, Bangabandhu, who gave leadership and direction to this country, and Bangladesh was able to not only fight the Liberation War, but win it. And I think this itself doubly makes this occasion and this honor and gives it double its value. और तीसरी एक बात जो शायद मैंने पहले कभी बताई नहीं है, मुझे आज बताते हुए बड़ा गर्व होता है। मैं राजनीतिक जीवन में तो बहुत देर से आया, 90 के आखिरी कालखंड में आया, लेकिन एक नौजवान एक्टिविस्ट के नाते, एक युवा वर्कर के रूप में, जो कि मैं राजनीतिक दल का सदस्य नहीं था, मैं भारतीय जनसंघ का कभी कार्यकर्ता नहीं रहा, लेकिन जब अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने बांग्लादेश के निर्माण के समर्थन के लिए एक सत्याग्रह किया, और जिसका उल्लेख सैनिटेशन में है, उस सत्याग्रह में एक वॉलेंटियर के रूप में मैं मेरे गांव से दिल्ली आया था, और जो एक गौरवपूर्ण लड़ाई आप लोग लड़े थे, और जिसमें हर भारतीय आपके सपनों को साकार होते देखना चाहता था, उन करोड़ों सपनों में एक मैं भी था उस समय उन सपनों को। And thirdly, something which I had not said earlier, but which I say today with great pride. I came into politics fairly late in life, around 1998, but I was always a youth activist and a youth worker. I was not a member of any political party, but under Vajpayee's leadership, when the Janasangh had organized a satyagraha for the Liberation War, and this is mentioned in the citation while this honor was being conferred, I came as a volunteer all the way from my village to Delhi. And this war, which was full of pride for the people of Bangladesh, and which every Indian wanted this dream to be realized. And among them, I too, among those millions, I too wanted full-heartedly that this dream be realized. आज मैं इस अत्यंत पवित्र अवसर पर वाजपेयी जी ने 6 दिसंबर 1971 भारत की संसद में एक विपक्ष के एमपी के रूप में जो भाषण किया था, उसका एक पैराग्राफ मैं पढ़ना चाहता हूं। दीर्घदृष्टा नेतृत्व क्या होता है, ये 6 दिसंबर के 1971 के उनके भाषण से हम अंदाज कर सकते हैं। उनके भाषण थे, मैं उनका ही कोट बोल रहा हूं। देर से सही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान करके एक सही कदम उठाया गया है। इतिहास को बदलने की प्रक्रिया हमारे सामने चल रही है, और नियति ने इस संसद को, इस देश को ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में रख दिया है जब हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वालों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में अपनी आजादी के लड़ने वालों और भारतीय जवानों का रक्त साथ साथ बह रहा है। यह रक्त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा जो किसी भी दबाव से
टूटेंगे नहीं, जो किसी भी कूटनीति का शिकार नहीं बनेंगे। बांग्लादेश की मुक्ति अब निकट आ रही है। ये वाजपेयी जी ने 6 दिसंबर 1971 हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बोला। On this auspicious occasion today, I would like to quote from a speech that Vajpayee ji had delivered on the 6th of December 1971 as an opposition MP in our parliament. It is a para which I will quote from, and this is one example of what is far-sighted leadership, and I think you all can make out from this quotation. It may be late in the day, but by recognizing Bangladesh, we have taken a step in the right direction. The process of changing history is unfolding before our eyes, and destiny has placed this parliament, this country, at an important juncture, where we are not only fighting shoulder to shoulder with those who are sacrificing their lives in the liberation war, but also attempting to give a new direction to history. Today, for Bangladesh's freedom, the liberation fighters and Indian Jawans are fighting side to side, shedding their blood. This blood will give rise to such a relationship which will not break under any pressure, which will not be the target of any diplomacy. The mukti or liberation of Bangladesh is very near. आज जब मैं वाजपेयी जी को दिया हुआ ये सम्मान स्वीकार कर रहा हूं, तब इस सम्मान के साथ हमारे संबंधों की दिशा जो वाजपेयी जी ने 2 वाक्य में कही है, उसके लिए भी हम संकल्प करने का ये समय है। और उन्होंने उस दिन अपने भाषण में कहा था, जो मैंने पहले पढ़ा, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा था, यह रक्त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा जो कभी भी किसी भी दबाव से टूटेंगे नहीं। और दूसरा आगे उन्होंने कहा था, जो कभी भी किसी भी कूटनीति का शिकार नहीं बनेंगे। वाजपेयी जी की इन दोनों बातों को हमने आगे नई पीढ़ियों तक देना है, ताकि भारत और बांग्लादेश के संबंध अटूट बने रहें, हमारे सपने साकार होते चले, एक दूसरे के सहयोग से साकार होते चले। यही शुभकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, बांग्लादेश सरकार का और बांग्लादेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने जो सम्मान दिया, इसके गौरव के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Today, when I'm receiving this honor of the Liberation War honor on behalf of Vajpayee ji, he had said something from the quote which I had just quoted, which is indicative of the direction to our relations. And I think the time has come again today to renew our commitment to take our relations forward to the way Vajpayee ji had described it. I quote once again, and he had said 2 things. This blood will give rise to such a relationship which will not break under any pressure, which will not be the target of any diplomacy. These thoughts of Vajpayee ji we must take forward to the new generation, so that our relations become unbreakable, so that together we can realize our dreams. And with my very best wishes, once again, I convey to the Honorable President, Honorable Prime Minister, to the Government of Bangladesh, and to all the people of Bangladesh, I express my sincere gratitude from the bottom of my heart. After getting the Bharat Ratna, it is with great pride that we are receiving the Liberation Honor, War Honor for Vajpayee ji. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, may I now request His Excellency, Mr. Muhammad Abdul Hamid, President of the People's Republic of Bangladesh, to deliver his speech. Ladies and gentlemen, His Excellency, the President of Bangladesh.
Your Excellency, Sri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, Your Excellency Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister of Bangladesh, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon to you, to all of you. I am indeed delighted to be present here on this august occasion of conferring Bangladesh Liberation War honor on His Excellency Sri Atal Bihari Vajpayee, Bharat Ratna, Padma Vibhushan. We would have been happier had he received the honor himself. At the same time, we feel honored that a very distinguished statesman and political leader, the Prime Minister of India, His Excellency Sri Narendra Modi, is amongst us to receive the honor on behalf of Sri Vajpayee. Excellency, we in Bangladesh are deeply appreciative of your pragmatic approach in leading the largest democracy and one of the fastest growing economies of the world. I fondly recall my visit to New Delhi last year when we met and had useful discussions. I was impressed by your vision for inclusive social and economic development. Distinguished guests, we all know what Sri Vajpayee did for Bangladesh when we were fighting our liberation war at the call of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Despite being in the opposition, he had the political pragmatism to lend his strong support to the government of Srimati Indira Gandhi for the cause of Bangladesh. Awarding Sri Vajpayee with Bangladesh Liberation War honor is just a humble expression of our gratitude and appreciation. We also must not forget Sri Vajpayee's role as the External Affairs Minister and later as the Prime Minister of India in strengthening our bilateral relations. We fondly remember his visit to Dhaka in 1999 when the much expected Kolkata-Dhaka bus service was inaugurated. On this one occasion, with great pleasure, I would like to announce that we have decided to honor each Indian soldier who had made supreme sacrifice in our War of Liberation in 1971. This is a humble and token expression of our gratefulness. Ladies and gentlemen, before I conclude, let us pray for the well-being, recuperation, and long life of His Excellency Sri Atal Bihari Vajpayee. I thank you all. Long live Bangladesh-India friendship. Thank you, Your Excellency. Ladies and gentlemen, this brings us to the end of the program. May I now request you all to rise for the national anthems of India and Bangladesh.